हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का यूनिट 3 का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल्ड है आपका 11th में ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक। नाउ इट्स अ टाइम टू डिस्कस द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्लास 11th। सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll know कि what is a trigonometric equation. So we will define it. An equation involving the trigonometric functions of an unknown angle or angles is called a trigonometric equation. कि किसी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑफ एन अननोन एंगल और एंगल्स की एक या एक से ज्यादा एंगल्स के लिए अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी इक्वेशन में है, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक equation. Now we will discuss the solution of trigonometric equation. Solution of trigonometric equation. As you discussed the solution of equation in the 10th class, like in equation solution of linear equation in two variables, solution of quadratic equation, all type of solutions you have discussed in the previous classes. Now it's a time to discuss the solution of trigonometric equation. All the angles, or we can say that the values or measurement of the angles which satisfy the given equation are called the solution of given equation. Clear? This was just the simple definition of solution of any equation. Now we will discuss the two type of solution in this topic. Number one है general solution. In the general solution, we will get the general expression for all the angles which will satisfy the given equation. Okay, the general expression means we will generalize the values of angle. The general expression for all angles which satisfy the given equation is called the general solution of a equation, given equation. Means we will generalize our answer, we will generalize the value of angle up to any value of n. Clear? For any value of n, we will explain, we will expand our answer. Next, we will discuss the principal solution. The principal solution is the solution only in the interval 0 to 2 pi. Okay, means only in the first revolution, one revolution. The solution in the interval
0 to 2 pi is called principal solution. Okay, means only we will discuss the value of that unknown angle theta only in the 4 quadrants given equation. Clear? So this was the just brief discussion of solution of trigonometric equation. Now we will get the general expression for some trigonometric functions whose values are 0 on any angle. Okay, so number 1 we will discuss if the sine of all angle is 0, sine of any angle is 0. Okay, means if sine theta is 0, then the value of theta is n pi. General expressions we are discussing here. Okay, we will write here the general expressions. If sine theta is 0, then theta is n pi, where n is 0 or any integer. Clear? That may be positive or negative. Clear? Next, if cos theta is 0, है ना? General expression for the angle of if cos is 0. If cos theta is 0, then theta is equal to 2n plus 1 pi by 2. As you know that na, the value of cos pi by 2 is 0. In the same way we can generalize it where n is 0 or any integer. Clear? जल्दी बोलो। दीदी लूडो खेले ना। दीदी खेल ले इसके साथ 5-10 मिनट। फिर आप मुझे पढ़ा। मैं उनके घर वीडियो डाल के आऊंगी, फिर पढ़ाऊंगी बेटा। ठीक है? ओके मेरी मारी मामा क्यों दीदी? जल्दी कर दिए थी। आज जल्दी रखिए। जानो। आवाज भी नहीं कर रही डाइस की। नहीं तो जल्दी हिल जाएगा, फोन हिलाइयो मत बस। ऐसे करे, ऐसे बस ऐसे रख दे। हाँ, चिल्लाइयो मत बस तू। ऐसे भी नहीं कर रही। चल ना। चल रहा है मैं क्या करूँ? जल्दी आओ।